तो हेलो कोडी आर्मी यार, आज का गेम बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि आपको नाम दिख रहा होगा, बिफोर योर आईज। तो जितना सुंदर नाम है उतना ही सुंदर ये गेम भी है। इसकी स्टोरी भाई नेक्स्ट लेवल है। फिलहाल ये गेम आपके ब्लिंक के साथ चेंज करता है। हाँ, तो ये गेम आपका वेबकैम यूज़ करेगा और उसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे जैसे आप ब्लिंक करते हो वैसे वैसे गेम चेंज होगा। अब इसमें गेम चेंज होगा, स्टोरी चेंज होगी या किसी की ज़िंदगी चेंज होगी, वो तो आपको गेम में पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये गेम बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा सा ही होने वाला, तो एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि स्टोरी भाई बहुत ज़्यादा इमर्सिव है। इसको मिस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप मिस कर गए तो आप बहुत अच्छा गेम मिस कर जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मज़ा आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। चलते हैं यहाँ सीधे गेम में कूदते चल के और देखिए ऐसी स्टोरी क्या है। मतलब नेक्स्ट लेवल है यार ये गेम, तो किसी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता इस गेम को। तो देखते हैं यार क्या कैसा रहने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा ये मेरा वेबकैम यूज़ करता है, तो हम नेक्स्ट करते हैं। मैं ये स्क्रीन नहीं दिखाना चाहता। आर यू वियरिंग ग्लासेस? यस। एडजस्ट सेंसिटिविटी, मेक योर फेस इज इवनली लिट एंड योर आईज आर विजिबल। हाँ तो भाई इससे ज़्यादा क्या रिंग लाइट लगी हुई है। अब क्या मेरे को क्या हेलोजन जलाऊंगे क्या? तो देखते हैं। फिलहाल मैं हिलूंगा नहीं, मैं ऐसे ही रहूँगा जिससे वो डिटेक्ट करता रहे, क्योंकि अगर ब्लिंक नहीं डिटेक्ट किया तो गेम आगे नहीं बढ़ेगा। और गेम बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस से शुरू हो रहा है। दिस इज़ अ गेम अबाउट ब्लिंकिंग। सी एवरी टाइम यू blink, okay, the game will notice, okay, see how this works, try blinking at the white। भाई ये तो मेरा मेरा तो ब्लिंक ही नहीं ले रहा है। क्या आंखें आंखें चश्मा उतार के खेलना पड़ेगा क्या? फिर मेरे को ऐसे दिखेगा? ओह अच्छा, क्या माउस मूव करना पड़ेगा तब हम ब्लिंक कर पाएंगे। ओके, तो माउस भी मूव करना है, मैं सिर्फ आंखें ही मूव कर रहा था। व्हेन यू सी अ मेट्रोनोम एंड ब्लिंक, व्हाट इज मेट, यू विल जंप फॉरवर्ड। अरे अरे कितना, अरे भाई की ब्लिंकिंग वो ठीक है। मेरी तो आंखें दर्द करने लगेंगी। कहाँ जा रहा हूँ भाई मैं? भाई जैसे जैसे मैं ब्लिंक करता हूँ वैसे वैसे ऐसा लग रहा है मैं आगे। अरे भाई ब्लिंकिंग तो होगी आंखों की ना। चलो कोई बात नहीं, हम इधर उधर नज़ारे देते रहते हैं। कोई वहाँ पे दिख रहा है मेरे को, मेरे को कोई दिख रहा है भाई। आओ भाई, बीजीएम कितना अच्छा है। गेट अवे यू मॉकी फाउल्स, दैट्स माइन। ओके Well, hello there, stranger. Whew. You're a real bright and shiny one, aren't you? I asked you for your name, but sadly you got no mouth to speak with, or hands to shake with, or nose to look down with. So we're gonna तो have to क्या find हम another way. वोल्डेमॉर्ट है क्या? ना हमारे पास ना See, आंखें हैं what ना you'll कान है ना find is, नाक है, तो क्या even though you're वोल्डेमॉर्ट no बना longer दिए हैं in क्या? your body, your ये लोग body's हमको। still inside of you, if that makes any sense. ओके So, if you understand what I'm saying, blink over my hand here. ठीक है। Ooh, well look at that. इफ आई You're a डिटेक्शन blinking इज genius. प्लस। हाँ वो ठीक है, कैलिब्रेट कर लेंगे। फिलहाल मेरा अच्छा काम कर I रहा knew है। you were special. You see all them poor souls down there, lost in the waves? I didn't choose any of them. I chose you. ओह तो हम चूजर मन है, See, क्या I बात है? just sometimes get a sort of a hunch, or what's a better word? भाई डिक्शनरी लेके बैठा है। Better word than that. Premonition. जहाज A में डिक्शनरी premonition लेके कौन that आता a है? soul's worth pulling up. ओह सोल्स वर्थ पुलिंग है। हमारी सोल इतनी अच्छी है See कि that उसको tower out there? इस जंगल से बाहर Big, निकाला गया है। scary क्या one? बात है? देख That's रहे हैं। where I'm taking you to see the gatekeeper, to be अच्छा, judged. किस I'm चीजों gonna के लिए? present your case, tell her the whole story of your entire life from prow to stir. Now, if she's impressed, I get paid the big coin, and you get yourself a spot in her magnificent city. ओके If she ain't, well, I eat seagull for dinner again, and you, well, we don't have to worry about that, because I am the best orator you'll find on these sickly waters. Class A storyteller, believe you me. Oh, shut up, you trash birds.
You had your chances. It wasn't my fault you were no good. Layabouts. तो अभी तक हमको इतना समझ में आया कि इस आदमी ने हमको Clock उस watchers. की से उठाया है और वो हमको वहाँ पे कहीं लेके जा रहा है और हमारे लिए स्टोरी सुनाएगा और उस स्टोरी से अगर इम्प्रेस हुए तो इसको इनाम मिलेगा और हमको एक वहाँ पे रहने की जगह मिलेगी और अगर इसकी स्टोरी से इम्प्रेस नहीं हुई वहाँ की गेट कीपर तो इसे फिर से सीगल खानी पड़ेगी और हमारा क्या होगा ये तो हमें नहीं बताया गया कि हमारा क्या होगा, लेकिन इसका कहना है कि ये बेस्ट ओरेटर है तो ये हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देगा। तो देखते हैं आगे स्टोरी में बढ़ते हैं और क्या क्या रहता है, कैसा रहता है। अरे भाई तो खुद ही पागल हो गया है ये मेरे को क्या बचाएगा। नहीं, पर भाई ने शांत करा दिया सीगल्स को। Sorry you had to hear that. हाँ सॉरी, कोई बात नहीं चाचा। एक चाचा का एक कान कहाँ गया बे, मैंने अभी नोटिस किया। ओह So sure, maybe I'm not the most verbose storyteller out there, but I know how to spin a yarn if I'm given something to work with. And that's where you come in. Your Okay. life. You're gonna show it to me. I want to see exactly what made you so absolutely great. So just think back to the very beginning, the first thing that you can remember. I'm gonna send you there. But understand, no matter how much you like it, you're not gonna be able to stay, alright? Every time you blink, you're going to jump forward in time. Could be a second, could be 5 years. That's just how this thing works. Alrighty then. अगर आपने इसकी बात समझी तो मैं दोबारा आपको समझाना चाहूँगा कि ये हमको हमारे उस अच्छी यादों में भेजना चाहता है, एकदम बिगनिंग में जहाँ हम जाना चाहते हैं और वो अच्छी यादें हैं, लेकिन हम वहाँ रुक नहीं सकते हैं। जितना हम ब्लिंक करेंगे हम टाइम में आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर हमने पहले साल से शुरू किया है तो हम ब्लिंक करते ही सेकेंड ईयर में पहुँच जाएंगे, फिर थर्ड ईयर में, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम वहाँ रुक नहीं सकते हैं। तो हमें अपनी अच्छी यादों में जाना है, तो चलते हैं यार। अच्छी यादें गेम लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है यहाँ पे। आप भी अपनी अच्छी यादों में इसके साथ चलते रहिएगा, मतलब जैसे जैसे ये बोलता जाए, देखते हैं क्या होता रहता है। I और hope आगे he's बढ़ते ready हैं। for this. Now, the next time that you blink, I'm gonna send you back. Now, don't be afraid, and don't try to fight it. The thing to remember about blinking is, well, it's only a matter of time. मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा अरे टाइम में ब्लिंक करूं Just बिफोर try योर to आई। enjoy it this time. ओके, एंजॉय करना शुरू करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा ब्लिंक करने की कोशिश करेंगे। अरे यार ब्लिंक कंट्रोल नहीं होता भाई। Look at that sun. वाओ, We've got a long, beautiful day ahead of us. कहीं Why पर are तो you आ गए smiling भाई। like that? You must really like it out here, huh? Well, I get that. I like it too. अरे यार चेंज हो गया भाई। हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा इन यादों में जी सके। मेरे को लगता है मेरी आंखें पकड़ के मेरे को बैठना पड़ेगा, मेरे को ऐसे करके बैठना पड़ेगा तभी खोल पाऊँ। मुझे तो वो जैसे टॉम एंड जेरी वाला नहीं Let's होता, go वो get you some अपने seashells. What do you say? लकड़ी लगा लेता और आंखें खुली रहती, क्योंकि मुझे लगता है मोमेंट बहुत अच्छे होने वाले हैं यहाँ पे और हम जितना You see चाहें that उतना big टाइम यहाँ spiky बिता plant सकते over हैं। there? That's called Opa. agave. 11 years from now, that plant will die so it can give birth to this tall, amazing tree covered in flowers. We'll have to keep our eyes on that one. भाई कितना अरे यार फिर से ब्लिंक कर दिया मैंने। Day really slipped away, didn't it? Oh well, days have a tendency to do that, I guess. Now, where's the first page of my piece? I can't find it anywhere. Did I put it in here? No. ओ भाई सीगल उड़ रहा है चिट्ठी लेके। कबूतर उड़ते थे हमारे यहाँ तो। ओ मैंने फिर से कर दे। Go ahead, kid. Look at that! There
There's your little hand. Benny 1 year old. We have to make him do this every birthday. That's a great idea. It'll really be something to see how he grows. आई थिंक आप भी समझ गए होंगे और मैं भी समझ गया कि हम एक अपने आप समझ लीजिए आप अपने बचपन की यादें जी रहे हैं या एक तरीके से समझ लीजिए एक बच्चे की यादें आप जी रहे हैं कि जैसे 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 उनके मॉम डैड मिले थे तो वो उनकी यादें थी उसके बाद फिर आप बच्चे थे तो ये आपकी यादें हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है यार मज़ा आने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीच बीच में आपको ऐसे ही समझाता रहूँगा बात करता रहूँगा मज़ा आएगी जिससे क्योंकि शेयर करने के लिए बहुत कुछ होगा मैं रैंडम यापिंग करता रहूँगा तो अपने आप को संभाल के रखिएगा वीडियो में और जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट में बताना मत भूलिएगा ओके हमारे लिए पियानो भी आ गया है Oh, you want to play along with mommy, don't you? यस आई वांना प्ले Give it बट time. I'm sure you'll be better than me soon enough. टाइम आगे बढ़ रहा है अरे फिर से ब्लिंक हुआ मेरा ब्लिंक कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से ओह नहाने का टाइम है भाई ये Sounds good, honey. I'm sending it to my mentor next week. It has to be perfect. ओ भाई Oh, बात sounds टब में pretty है perfect वे to Yeah, what do you ये like? हमारे बचपन में क्यों नहीं हुआ करता था ऐसे इस शिप घूम रहा है और I हम like the music. आई टू लाइक द अरे भाई मैं ब्लिंक कंट्रोल करना Look at चाहता his हूँ little face. What do you think he's thinking about? Probably solving the problems of the universe. आई थिंक ये हमारा गार्डन है या प्लेग्राउंड I टाइप think है he's जा gonna be smart. I don't see why not. I mean, अरे No, यार it's not मेरी derivative. मेरी At least I ब्लिंकिंग कंट्रोल think नहीं it होती मेरे was. से Do you think you could tell the other members of the selection committee what I just told you? Right. No, I'm sorry. I guess I just put a lot of expectations on this call. Okay, I understand. Thank you for considering my piece, John. It really means a lot. आई थिंक अब हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं क्योंकि हम पेंटिंग वगैरह भी कर रहे हैं That's sure a little mess of color. Hey, we do not throw things in this house. If you're mad that you aren't good enough yet, you'll just have to keep working at it. You know, one day you'll be able to paint exactly what you have in your head. You'll be a real artist. Unlike your poor mom. यहाँ पे अगर आपने वो छोटा सा एक डिटेलिंग देखी हो मुझे नहीं पता ये डिटेलिंग है या नहीं है पर ये मेरी डिटेलिंग है या मेरे थॉट है यहाँ पे कि आपको हार नहीं माननी है आप जो भी कर रहे हैं करते रहिएगा आप सफल होंगे एक दिन जैसे कि पेंटिंग वो ख़राब थी पर कोई बात नहीं मैड होने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ पे आप वो पेंटिंग हम अगर कंटिन्यू करते रहेंगे मतलब हम करते रहेंगे अगर पेंटिंग तो एक दिन हम अच्छे पेंटर बन जाएंगे जैसा कि कहा आपने उसने कहा कि अपनी मॉम की तरह तो बट कोई बात नहीं देखते आगे की स्टोरी क्या रहती है कैसी रहती है मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ उतनी ब्लिंकिंग कंट्रोल कर लूँ पर ओके ओके See? That used to be my piano. ओके My dad gave it to me. He loved music. Fled his home country just to have a chance to pursue it. ओके God, he made me practice so much. I hated it at first. I think he hoped to make it further than conducting the high school choir. Never said anything, though. He was what you might call the strong, silent type. Can you believe I grew up in the snow? अरे फिर hey, Benny. Are you ready to see something really special? ओके I तो just don't हमारा want him to get attached. Richard, What? that's the cutest thing I've ever seen. Yeah, what's wrong with that? We can't keep him, can we? I mean, I'm pretty much definitely allergic, so no, right? No,
We'll find someone to take him. But while he's here, I say we call him Ernie. Little Ernie. Fits him, doesn't it? Oh, he's so cute. He's so sweet. I think someone likes his new cat. Richard, What? his cat? Yeah, I just mean, for now. Of course we're not going to keep him. Right. I believe that. I know where this is going. For now, honey. But नहीं, another thing I'll just say, मैं पूरा कंट्रोल कर रहा था कि ब्लिंक ना करूं और मैं उनकी पूरी कहानी। ओ भाई, Now play the C major chord I taught you. लगता है ये बिल्ली रखने का मौका हमको मिल गया है। बिल्ली हमारे पास ही है, मतलब कैट हमारे पास है। आई थिंक उसको कहीं नहीं भेजा गया। There you go. Doesn't that make you feel happy? Like you just want to jump up and down? यस, Now what about C minor? You remember how to play that one? Very good. Just one note different. That one sounds sad, doesn't it? Amazing what a difference one little change can make on how a person feels. Sort of like me and your little friend on your piano there. ओके। इनको एलर्जी है इसलिए उससे छींक आ रही, पर इन्होंने फिर भी मुझे को बिल्ली रखने दी है। नाइस, आई लाइक इट। she was in grad school studying composition. I never met anyone like her. I just prayed to God I could somehow keep up. I think she liked that I was a professor. Gave me a certain gravitas in her eyes, you know, which I very quickly lost. God, she dragged me to so many places. It was wonderful. Where would you want to go if you could only go to one? इजिप्ट और ग्रीस। मैं इजिप्ट जाना चाहूँगा, मेरे को पिरामिड्स पसंद है। Now, you know the ancient Egyptians believed cats had godlike. अरे हाँ, अगर आपको भी नहीं पता और नहीं पता तो बता दूं कि इजिप्शियन लोग जो थे वो कैट्स को बिलीव करते हैं क्योंकि उनके गॉड लाइक पावर होती है। वो कैट्स को बहुत ज़्यादा मानते थे। अगर आज की डेट में भी आप अगर इजिप्ट जाएंगे घूमने तो वहाँ पे आपको बहुत सारी कैट्स दिखेंगी और वो लोग कैट्स को अच्छे से रखते हैं। आई थिंक आज हम इस पे बैठ के बजाने वाले हैं। कूल, मज़ा आएगी। और ये टोन हम बजा पाएंगे या नहीं बजा पाएंगे, लेट्स सी। Wait, that's my piece. How did you figure out how to play that? Richard, are you hearing this? What? He's playing my piece. He must have figured it out by ear. I mean, I was a gifted kid, but he's brilliant. क्या बात है। अरे यार फिर चेंज हो गई स्टोरी। मेरी ब्लिंक के साथ वही स्टोरी चेंज हो रही। मेरे को स्टोरी थोड़ी जीने का है, पर क्या बताओ भाई, ब्लिंक नहीं कंट्रोल होता। चाहे जितना कुछ, एक तो पंखा चल रहा है तो हवा लग रही है आंखों में, तो और जल्दी जल्दी ब्लिंक हो जाता है। Oh God, I have my interview in 5 minutes and I completely forgot to feed him. Don't worry, I already did. Oh, thank God. For a moment, I forgot what a great father you are. Focus on the interview, honey. I got this. नहीं, मैं ये वाली स्टोरी थोड़ी देर जीना चाहता हूँ। मैं नहीं ब्लिंक करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ। हो गया ब्लिंक। Excuse me, of course, sir. It's all organized into folders, sitting ready on my kitchen table. They will literally be on your desk when you get in. What could possibly happen? ओह, हमने ड्राइंग बनाई भाई, ड्राइंग। अरे We are. एक तो इसको सुसु भी यही करने, पागल बिल्ले। ये कोई सुसु करने की जगह तेरी वो पोटी सुसु यही करेगा कि मेरे टेबल पे। अरे यार, When's he coming? I'm flying him out in February, remember? You know, I think he was pretty surprised that I could actually afford to do that. Hey, why not? You're a working woman now. I guess that's true. ओह, हमने फिर से बनाई। Yeah.
Please let the cat know. It's time to use the litter box, though. Baby steps. He's got one eye. बिल्ली बनाई हमने, कॉर्पोरेट अकाउंटेंट हैं। ओके, हमारी फिर से ब्लिंक हुई। This is called a metronome. We use it to measure time so we don't get lost in the music. I ओके, want you to start using it before Grandpa comes to visit. You know, my father once told me, when I was वेलकम about your होम age, डैड। the only way to fight against time is to create a work of genius, which might live on after you're gone. So I asked him, what about your children? Thinking, I might be a work of genius just as I was. He said, yes, I suppose. If you made a work of genius. I haven't seen him in over 10 years. Can you believe that? नो, आई I कांट wonder बिलीव। if he'll even recognize me. चलो आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी से। कौन आ रहा है? हम नहीं उठा सकते, हम अभी छोटे हैं, हम अभी बालक से बालक। अरे ब्लिंक हो गई मेरी आंख। हम बालक हैं, बालक। ओके, You really need to stay in time with the metronome, okay? Subdivide the time. 1e and a 2e and a 3e and a 4e and a 1e and a 2e and a 3e and a 4e. You're off. You're off, Ben. You can't hear that? ओके, हमने अच्छा बजाया, हमने अच्छा बजाया और There म्यूजिक you काफी go, अच्छा buddy. था यार। Okay, now keep a firm grip on it, just like that. Oh my. Well, don't think you like that, pal. Sorry, buddy. ओह, हम Turn around, फोटो Al, so we can photograph you. हम फोटो खींच रहे हैं भाई, I'm just really behind right ब्लिंक के now. साथ फोटो खींच रहे Why हैं। don't you ये take photos in the दिमाग। backyard? It may not be interesting at first, but if you keep going back out there every day, you'll be surprised by how much it changes. ओके, हमें बोला गया है कि यहाँ मेरी खोपड़ी पे जैसे मम्मी लोग नहीं होती हमारी टिपिकल मम्मी लोग जो डांटती रहती कि मेरी खोपड़ी पे सारा काम मत करो, जाके बाहर घूमो, जाके बाहर खेलो जाके। तो वही अभी हमारे साथ हुआ है कि मेरी खोपड़ी पे ये फोटो मत खींचो, जाके बाहर खींचो जाके। Ernie, buddy, Ernie! Ernie. Ernie, we need you! Oh, God, El, what if you got eaten by a coyote? My sinuses would be eternally indebted. What did you just say? No, I said I'm really worried. Here, kitty, kitty, kitty. God, honey, I'm worried too. I know, sweetie. So you're saying it's a coincidence that it disappears for weeks and then comes back with a huge belly? But Ernie's a boy. And you're sure about that? ओह, बिल्ली का नाम, हमारी बिल्ली का नाम अर्नी है। नाइस। And that was based on... Equal distance. I'm still not understanding how you let this happen. I don't know. He keeps coloring the grass blue, the इनको ocean लगा green, अर्नी and then the बॉय sky है red. और अब अर्नी के बहुत सारे बच्चे wrong हैं। with that? इन्होंने एक अर्नी No, are you रखने का kidding? हमें I मौका love दिया it. था, अब यहाँ पे अर्नियाँ हैं बहुत सारी। ये तो इनके साथ भाई कितनी फोटोज खींचेंगे हम लोग। हम लोग फोटो ही खींचते रह जाएंगे, लगा फोटोया हैं अपनी। ओह, हमारे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है लग रहा है, मतलब हम बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, आइसक्रीम खाने आए हैं, रात में चोरी करके आइसक्रीम खा रहे हैं क्या? नहीं, हम आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते। I know, it seems impossible that you could ever play something so complex. ओके, जनवरी 7 हो गया है। But just take it one day at a time. Trust me. नाइस।
अच्छा पियानो बजा रहे हैं ले हम लोग। You're really getting there, honey. Next week we'll start working on your other hand. क्या बात है, अच्छा पियानो बजा रहे हैं भाई हम लोग। Listen to him, Richard. I've been listening to him in that competition. I thought you said competitions took the joy out of playing music. Not if you win. भाई कितना अच्छा म्यूजिक है यार ये। अरे चेंज हो गया भाई। Okay, 2 brackets on each side. The quiz said find the zero, and he just drew an arrow. भाई ब्लिंक हो गया मेरे से, पर आपने भी रिजल्ट देखा मेरा और मैंने भी देखा भाई, जीरो मिला है, लिटरली जीरो हमको दिया गया है टेस्ट में, एफ मिला है। दिन भर म्यूजिक बजाएंगे तो और क्या ही होगा, एफ ही तो मिलेगा हमको। हमारे एफ लग गए हैं अब नहीं एफ लग गए हमारे। I want that box full by the time I come in there. If you भाई don't play with it हमारे anymore, we're बचपन done. के सारे गिफ्ट फेंके जा रहे हैं। Congratulations, B! First of many, I'd assume. हमारे सारे बचपन के जो खिलौने थे उनको पैक करके फेंका जा रहा है, क्यों फेंका जा रहा है? This isn't my house. It's not my house. Right, it's my house. You have 5 minutes to get down. Fall back, you fool. I'll have your heads. I'll feed them to the cat. Chloe, I'm playing some. Hey, you. Yeah, you. Come over here. Yes, Mr. Camera Boy, I'm talking to you. ओके, पहली बार हमसे किसी ने बात करनी शुरू की है। क्या हम बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि उसने कहा था हमारे कुछ भी नहीं है। Why are you always out here taking photos? You know, if you really want to take a photo of something cool, you should take a photo of this. Chloe! Oh अरे shoot. मैं फोटो लेना I भूल think I गया। gotta go. But try to take a photo of me running into my house. I'm pretty fast, so I don't think you'll be able to. But you can try. What the hell? How did he do that? आई एम तेज, आई एम Quiet, तेज। everyone. Benny's about to play for us. ओके, तो हम लोग पब्लिक है क्या आज हमारे आसपास? हाँ, जितना लग रहा है पार्टी। Wow, L, he's unbelievable. My God, I didn't realize our head of accounting was raising a musical prodigy. Didn't you used to be a composer yourself, Elle? No, I don't know if I'd say that. But you used to write your own music, right? Yeah, but I haven't done that in years. मैं पूरा Not since म्यूजिक I was सुनाऊंगा 4 तुम or लोगों 5 को, years old. मैं पूरा म्यूजिक And what do you do, Richard? He's a professor. Of what? ओह आई ट्राइड कि Class is मैं world तुम लोगों history. My name is Mr. Isaac. को आइजैक हमें हिस्ट्री सिखाने आए हैं, समझ रहे हो? आइजैक हम In each unit, क्लोई we'll study civilization. Look on your desk. I wrote you something. We are in the same class. What a coincidence. Please keep in mind that while we are at school, we don't know each other. We don't talk to me ever. Not Love, doodle on the Chloe. sidelines, not stare off into space. वो आपका स्कूल का प्यार, वो बचपन का प्यार। अब देखो ये अब शर्माने वाली बात नहीं, आपको भी स्कूल में भाई साहब होगा ना वो क्रश, आपकी भी होगी। और ये ऐसा चिट्ठियों में लिखने वाला सीन आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो हुआ है। इस बारे में कभी बैठ के बात करेंगे फुर्सत से लाइव स्ट्रीम में। पर अगर आपके साथ हुआ है तो आप भी बताइए, ये चीज़ें देख के आपको कुछ याद आया कि नहीं आया? पुरानी यादें आपकी ताज़ा हुई या नहीं हुई? मेरी तो कुछ हुई। Okay, now I will go on to the next slide. Chloe, tell me, what did the quote say? Right, I definitely know this. You were taking notes, weren't you, Chloe? Oh, yes, of course. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Come on, Chloe. We're all waiting.
ले तो रहा है आंखें मेरी, फिर क्या हो गया? It's that people who are in the past always remember. The past. I don't know what I'm saying. Those अरे यार I क्लास अच्छी tried to चल रही convince थी. your father not to buy you that thing, but he insisted. Half suspect he bought it for himself. ये क्या है? The little guys are pretty cute, though. ओके, आई थिंक 11 साल के हो गए हैं हम, क्योंकि Ah, 11वां job बर्थडे for मन freaking रहा है Spain, हमारा. think of that crap. तो आई डोंट नो, ये कुछ तो है अपने लिए. ओ चेंज हो गया भाई, आंखों में हवा लग रही, मेरे पंखा चल रहा है. Definitely seen you next door, but I didn't realize you guys had become friends. Oh, sure. We sit together in history class. I don't know what I'd do without old Benny. Very sweet. Thank you for playing this game with him. Your dad just thanked me for hanging out with you? That's a very interesting detail. यस. Okay, shut up, shut up. अरे फिर से It's called a blink हो. magnet school. ओके, हम कार में बैठे हैं. It's about an hour away in a town called Burton. I know the change can be scary, but हम I just want कहीं you to तो go जा in रहे and हैं. meet the dean I spoke with. You know, life can take you to some incredible places if you're really, really good at something. It's just you've had so much trouble making friends at Playco. I want you at a place where people really get you. So, what do you think, Benjamin? You think you could excel in that sort of an environment? Sorry, he gets very shy. Oh, not to worry. If he's as gifted as you say he is, shyness is no problem. Why don't you two come back closer to the end of the year for an audition? We'll get a few pieces that you can have him start learning. I'm eager to hear what your son is capable of. तो हमको आई थिंक वहाँ पे एक स्कूल, म्यूज़िक स्कूल में हमको एडमिशन दिलाया जा रहा है, या कंपटीशन में किसी कंपटीशन में हमको भेजा जा रहा है म्यूज़िक वाले में. आई थिंक जिस पे हमारी मॉम जो है वो जाना चाहती थी, पर वो शायद नहीं जा पाई, या जो भी था वो आगे पता चलेगा. पर हमको ऐसे ही किसी जगह भेजा जा रहा है, और अभी हमको वहाँ से वापस कर दिया गया है कि जाओ सीखो, जाके कंपटीशन होगा, फिर As वापस you can आना. see, there's some very fast runs in there, and a lot of stuff I've not taught you properly yet. So no pressure. I just want you to try, and we can see if you start enjoying it. ओके, तो हम बजा के देखेंगे. Just like to see you really rise to the occasion, just this once. I ओके, wish I had the option of going to a school like that when I was your age. I wouldn't be कोई बात working नहीं. this boring job or living in this boring town, I'll tell you that. जैसा कि मैंने कहा था कि आई थिंक इनको वो मौका नहीं मिल पाया था. What was that? Was that the piece? What is going on with you these days? I barely know whose kid you're supposed to be. Oh my God, Benny! What are you thinking? तो हमारा नाम बैनी है. इससे मुझे पता चला कि हमारा नाम बैनी है, और हमने उस पेपर को फोल्ड करके फेंक दिया, और मुझे नहीं पता हमने ऐसा क्यों किया कि उस पेपर को हमने फोल्ड करके फेंक दिया, और एक्सीडेंट होते होते बच गया. ये तो को थप्पड़ नहीं पड़े हमको. डेज अंटिल ऑडिशन. ओके, 30 डेज है. चलो बजाना शुरू करते हैं. आई थिंक Don't answer that, Ben. You can talk to your friend after you practice. Oh my God. Is she really calling you again? What, is she obsessed with you? नहीं, अरे मैं डिसोबे नहीं करना चाहता था. Anubis, in the presence of my aunt, who you Ah, remember yeah. is the goddess of Yeah, truth well. and justice, would weigh the deceased soul against a feather
determining whether it was worthy of entering into her land of the dead. And what if they are deemed unworthy? Well, you can see that ugly fur ball under the scale? That is Amamet, and she's got, and yes, Hey, that's a she, Mr. the Kid. head of a crocodile, Look the fur of a lion. See, इसका फिर से एक and the लेटर body आया। of the hippopotamus, though I would not say that to her face. Now, as you can see, she is ready to devour क्या any लिखा of है? the deceased who do not Want to pass get in judgment. me a picture of Sort of face like feeling. me with your weekly quizzes. So I am not quite sure why I don't hear more frantic scribbling right now. Ew, why is he so scared looking? Okay, I'll call you when I'm leaving my house. You better pick up my इनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है धीरे धीरे और मैं डिसोबे करना शुरू कर चुका हूँ। डेज अंटिल ऑडिशन 1 यू पुट दिस बी। Okay, listen, I don't claim to understand the motives of children. But Benny has a chance here. A real chance to be really good at something. I mean this with no offense at all. But I don't think you actually really understand what... चीज़ें बिगड़ने लगी हैं धीरे धीरे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। ऐसा होता नहीं कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके रिश्ते आपके माँ बाप से थोड़े से दूर होने लगते हैं, आप चीज़ें किसी और डायरेक्शन में जाने लगती हैं, आप रूड होने लगते हैं, वो आपके साथ रूड होने लगते हैं क्योंकि वो आपकी तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी मेरे को यहाँ पे बिगड़ती हुई समझ में आ रही हैं। मे बी स्टोरी के एक्शंस ऐसे हैं या स्टोरी ऐसी बनाई गई है कि आप रिलेट कर सकें। आई डोंट नो आपने ये रिलेट किया या नहीं किया, पर ये ऐसा होता है। Lights out. You need to be rested for tomorrow. Memory consolidates when you're asleep. So if you go to sleep now, you will awaken a master. Trust me. Okay. Richard, tell your son to turn the lights off. Benny, Mom says turn the lights off. Not Mom says, you say. Benny, I say turn the lights off, Not just mom. Killing me, Richard. We're supposed to be in bed. और हमको नींद तो आ ही नहीं रही है। अरे इश्क। स्नीक आउट ट्राई टू स्लीप, स्नीक आउट ट्राई टू स्लीप, स्नीक आउट ट्राई टू स्लीप, स्नीक आउट ट्राई टू स्लीप। देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे। अगर हम अब आप यहाँ पे वो वाला है ना कि ऑप्शन आप जो चूज़ करोगे उस हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी क्या कायदे से मैं होता तो स्नीक आउट। Wow, didn't think you'd actually pick up. I mistook you for a baby. I apologize. Okay, so meet me out in the alley in T-minus now, okay? Chloe, out. हाँ, देखो दो चीज़ें हो सकती थी। मैं एक इस तरीके से जा सकता था कि नहीं मैं बहुत अच्छा बच्चा बन, पर I'm ये really glad you're here. रियलिटी आप भी जानते हैं कि क्या होता है। अगर There's आपके साथ भी something I ऐसा होता think तो we आप need to कोई talk फोन to you पिकअप about. करते। Or to get off my chest. Okay. आई कितना I don't सुंदर think लग रहा है। Constance is actually a really good game. My cousin Yoon, he was in town this weekend, and he was explaining how it's actually a ripoff of a really good Japanese game. He calls it a cash grab. So I'm sorry that I made you like it because it's actually a terrible game. But I also think that if it was a really good game, maybe we wouldn't have enjoyed playing it as much. We would have been so focused on how good it was and not the feelings we had while we were playing it. Like, my favorite vegetable is the tomato. But भाई you, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि अब वो फीलिंग जा चुकी है Probably जब didn't आप sleep at बचपन में all. अपने छत Out in the में cold सोते all थे night. और तारे already देखते feeling sick, थे aren't you? और वो फीलिंग एक नेक्स्ट लेवल होती It's थी। अब okay, आप you एक still got बंद this. कमरे में सोते I mean, all हैं the practice had और to count for आपने something. आखिरी बार Maybe आसमान just को try खुले and close आसमान your को eyes कब now, देखा get a था little वो sleepy. आपको भी नहीं पता होगा आई थिंक, और वो चीज़ मुझे भी नहीं पता। और ये In your हम own पता भी time, नहीं चला बड़े होते Benjamin, होते कि हम we ये are कितना very पीछे जा चुके हैं और excited हम to इस चीज़ hear. को अब मिस करते हैं। अभी मैंने ये चीज़ नोटिस की जब वो साथ में लेटे हुए थे तारे देख रहे थे, कंस्टलेशंस देख रहे थे, मतलब रियली। चलो हमारा ऑडिशन टाइम हो गया है, आ जाओ देखें ऑडिशन में हम क्या उखाड़ पाते हैं।
भाई जैसा होता है ना कि आपकी ऑडिशन में दिल की धड़कनें तेज होती हैं वैसा ही। Oh, okay, okay. I think that's enough. So, Benjamin, why don't we plan on having you come back next year again, once you've had a bit more time to practice? Yes? As you know, Burton isn't the right fit for every student, and I wish you the best of luck on your path, wherever it may take you, okay? All right. चीजें बिगड़ गई यहाँ पे। Maybe I pushed you too hard. Maybe I turned into my own father. I चीजें don't बिगड़ know. गई यहाँ पे। You have to find something to focus on. The world isn't very kind to people who aren't really good at something. बात तो सही है, अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं You तो wanted दुनिया me आपको from किसी school for a while. चीज के लिए नहीं Just देखती है। until this nasty thing वो आपने कहावत सुनी होगी ना, वो थ्री इडियट्स वाली, अगर आपने मूवी देखी है तो उस पर एक बात कही थी कि अगर आप कमाएंगे नहीं तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। तो वही वाली कहानी है, और लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। तो अगर आप किसी चीज में फोकस नहीं करते Hey, तो Elle, would चीजें you काफी mind डिफिकल्ट taking a quick हो walk with सकती me हैं। down to my office? There's a small clerical thing I need you to look at before I can let you two go. Oh, yes, of course. I'll be right back, Benny, okay? Just maybe 5 minutes, kiddo. Okay? हम डॉक्टर के पास क्यों आए हुए हैं? अपने को क्या हो गई, क्या हुई? हम डॉक्टर के पास क्यों आए हैं? चलो चेंज करते हैं सीन को। Such a crucial time in his development. He shouldn't be confined to his room. He shouldn't be confined in his room. Having him home for a little means I can spend more time with him. You know? We can focus him, make sure he's staying engaged. मैं सुनना चाहता था पर मेरी आंखें ब्लिंक हो गई। ओ भाई कितना अच्छा नज़ारा है, कितना सूथिंग है यार ये। मैं भाई यहाँ पे पूरी रात बैठ सकता हूँ अकेले, और बस देख रहे हो एंडलेस वाटर है आप बस। अरे यार क्यों चेंज हो गया भाई ये? This isn't video game time. I want you to figure out something actually productive to do while you're home from school. जैसा कि सभी का हाल यही होता है, आप घर से आते हैं पर फिर भी आपके घर वाले यही कहते हैं कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ करो, कुछ करो। हम बचपन की यादों में वापस जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं खेलना शुरू कर दिया। आई थिंक हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग में है, जितना मुझे अंदाज़ा लग रहा है। Hey, B! Dinner's ready! B! You hear me? What's he doing in there? He's drawing. He's becoming completely obsessed. हाँ वही मैं, Oh, when you're well, ever since he got sick, all he does is हम ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं और हमारी ड्राइंग देख रहे हो भाई नेक्स्ट लेवल होती जा रही है विद द टाइम। And Mr. Benjamin Bryn has been awarded first place. ड्राइंग में हम नेक्स्ट लेवल हो गए, फर्स्ट प्लेस मिली है हमको, क्या बात है। भाई साहब क्या ड्राइंग की आर्ट स्कूल एप्लीकेशन। क्वेश्चन 3 इन 2 शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब व्हाट मेक्स यू वांट टू परस्यू अ करियर इनटू द आर्ट्स। इन 2 शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब यू वांट टू परस्यू अ करियर इन द। भाई साहब भाई ने क्या आर्ट बनाई है यार, देख रहे हो। You are not here to learn to be painters. You are here to learn to be artists. And although I was hired to teach you, it is a sham. There is no teaching art. डैम भाई क्या ड्राइंग बनाई है ब्रो ने। So don't just sit there slack-jawed. Make art.
यू पोनीस। ये भाई ये इसकी भैंस की, अरे बाप रे छी। Oh, how very wacky and fun these are. It's very zany, very cute. Lucky for you, the world is always in need of more greeting card artists. भाई ये ड्राइंग हमने कुछ गंदी नहीं बनाई? हाँ, ये ड्राइंग थोड़ी हमने गंदी बना दी है, हमको थोड़ी अच्छी बनानी पड़ेगी। विद द टाइम हमारी ड्राइंग गंदी क्यों होती जा रही है भाई? There you go, Mr. Bryn. Feel each shape. ये हमारी ड्राइंग को क्या होता जा रहा है? Oh, you fiend. ये क्या पॉटी बनवा रहा है ये हराम का पिल्ला? ये I कौन want सी you all आर्ट? to take a long look. आई एम सॉरी अगर what ये Mr. आर्ट Bryn थी, has done अगर here. कोई ऑफेंड हुआ है तो आई एम रियली सॉरी, पर ऐसी आर्ट तो मेरे को समझ में नहीं आई। You see, he has reached down deep within himself and created a masterpiece. I pray you have a strong. ये अगर मास्टरपीस था तो आई डोंट नो फिर अच्छी ड्राइंग क्या होती है भाई? मुझे देखो कोई समझ नहीं है इस चीज़ की। I'm stunned. The ironic sincerity of this piece is so sincerely ironic. He's flipped the discourse so thoroughly, I'm actually dizzy. What? I know that lots of agents gave you lots of cards, and it all probably feels weird and alienating and the opposite of what being a starving artist is supposed to feel like. But if I can teach you one thing, it's that if opportunity knocks, you open the door. Making a living isn't selling out. I wish I had thought of it that way. Benjamin! Marvelous show last week. Truly stunning. I've never been prouder. One little thing. Don't worry. You're not selling your soul. I've got a good feeling about you. We're going to make a... हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? Actually making some money with one's art. Lord knows I could never do it. तो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, मतलब हमारे पास अब कमाने के लिए भी कुछ है, खाने के लिए भी कुछ है, भले ही हम उस आर्ट से पैसा कमा रहे हैं। नाइस। Tell me, what are you going to do with it? Pretty interesting. Honey, stop. Is that Benjamin Bryn? Oh my god. I think it is. Of all places. डैम, ये अच्छी लग रही है मेरे को डिजाइन। सोच विचार से बनाई गई है ये डिजाइन। ओह, हम Hey, honey. Your work's incredible. The new... ओके, तो आई थिंक अब हमारी Hey, Ben. Don't even pick up this call, okay? I mean it. I'm just calling to inform you that I went to the doctor today, and, well, I'm going to be a little sick for a while, but really, I don't want you worrying about it at all. You're at such an important moment in your career, and I'm just so proud of you. This is nothing but a little bump in the road for me. I'm going to be fine. But that's enough from me. Now, you'll hear from the person who I believe is the single thing in the world my wife was most proud of. Her. भाई साहब, Go on, B. Say something. भाई साहब, नहीं यार,
नहीं। Why aren't you talking? अरे यार। Hey, honey. Guess who's calling? Again? Look, you know I talk to big, important people. People who could change your life every day. What the hell am I supposed to say? What do you want me to say? That I haven't heard from my star client in 6 months? This is getting ridiculous. You've got to get it together. अगर आपको नहीं समझ में आया और आप थोड़ा मिस कर गए हैं तो मैं बता देता हूँ। भाई ने लाइफ में बहुत कुछ कमा लिया है, भाई ने मेहनत की, भाई ने आर्ट एकदम नेक्स्ट लेवल चले गए, भाई आर्टिस्ट बन गए और भाई बहुत पैसा कमा रहा है। इस पैसे कमाने के चक्कर में भाई वो रिश्ते भूल गए जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो रिश्ते, वो माँ और वो बाप, सारे रिश्तों को भूल गए भाई जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप कमाने और पैसा कमाने और ज़िंदगी में यहाँ जाने के लिए, टॉप पे जाने के लिए आप सब कुछ छोड़ देते हो, सब कुछ भूल जाते हो, पर आप वो चीज़ें भी छोड़ देते हो जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब आपको समझ में आता है तब बहुत ज़्यादा समय लेट हो चुका होता है। जैसे यहाँ पे जब वो ड्राइंग कर रहा था तो उसके पास फ़ोन आया उसकी माँ का, जिसको वो उठा भी सकता था पर वो नहीं उठाया। वो मैंने पिकअप करने की कोशिश नहीं की, वो मैंने पिकअप भी नहीं किया कॉल। अगर मैं पिकअप कर लेता तो आई थिंक शायद उस दिन हमारी आखिरी बात हो जाती, पर आखिरी बात नहीं हुई। मैं अपनी ड्राइंग में बिज़ी था, मतलब अपनी आर्ट में बिज़ी था और मैं पैसा कमाने की होड़ में था और वो बात नहीं हो पाई। और यहाँ पे एंड देख रहे हैं कि आप कैसा रहा। तो आई थिंक हम इससे ये सीखते हैं कि हमें हमेशा हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना चाहिए। चाहे आप पैसा कमाने की हो ज़िंदगी में लाइन लगाए हो, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, पर हर चीज़ का बैलेंस रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ बीत गई है, आपका जो समय बीत गया है वो वापस कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ थी, ये Hey, Benny. Guess who's calling? Well, here's the call. We're finished. We're done so kaput. It's over. भाई की देख रहे हो Shut the hell up, Tabitha. अब ड्राइंग भी खराब होती जा रही। Just calling to tell you. I think I'm selling the house. भाई सब कुछ बिगड़ गया यार। I can't move without bumping into her. Then I just find myself. Take whatever you want. With your mother gone, I'm hoping to finally live without all the clutter. Yeah, I think you did the right thing. By the way, she didn't want you to see her like that. She just wanted you to focus on your work. That was the only thing that mattered to her. यार ये बहुत ज़रूरी है, ये जो टाइम देखा। What's that? What's so fascinating, son? यार कुछ भी टॉस करने का मन है भाई, इतना इमोशनल नहीं करना था। बीइंग हाई, अरे यार चीज़ें अब देख रहे हो जिंदगी कहाँ से कहाँ वापस आ गई है। लाइफ ने जहाँ से शुरू किया था सर्कल होके हम वापस वहीं आ गए। Benny. It's like she's standing in the room with us. Like I can see her. Benjamin Brain, A Life in Painting. The passing day inspired by the musical composition of his late mother, the composer Ella Smith, relatively known in her life. Brain lifted his mother's work out of obscurity and creation of. Believe this. It's been He years. is now considered to be one of the greatest composer of. It's unbelievable. I'd love to walk through it again with you. I mean, if you were down for that. I just can't believe that my entire childhood I was living next to a bona fide genius. I should have guessed it. I mean, with. And your mom. I always heard her playing piano from next door. Hey, so, not to be forward, but what are you doing?
I'd really love to catch up. I can't believe everything that's happened to you. I want to hear all about it. Now would you look at that? I cannot believe my luck. You finally hit the jackpot, Flapjack. All the nobody nothings dying every day. You finally sink your hook into a... Oh, well, there you are. Well, hello, sir. If I had realized, I would have cleaned up. I'm just used to fishing up a different class of soul. I mean, sure, I've had scientists, a couple college athletes here or there, but whew, an internationally renowned painter? The gatekeeper's gonna eat you up. Hey, speaking of that, why don't we give your story a test run? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन है और हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या हैं। हम एक सोल हैं, ये हमको गेट कीपर के पास लेके जा रहा है, उसके आगे का क्या होने वाला है वो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत की कहानी और आपकी सारी कहानियाँ, सारे डॉट्स कनेक्ट हो चुके हैं। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। भाई नेक्स्ट लेवल इंटरेस्टिंग कहानी थी भाई। See if I'm getting all the strokes right, the proper composition, if you catch my drift. Forget about it. All right, here we go. Gatekeeper! Before you stands the soul of a great man. Now, would you describe yourself as a happy kid or a lonely one? यार लोनली वन, क्योंकि देखा मैंने हैप्पी वाला सीन तो कहीं था नहीं, हम लोनली वन वाले ही थे। His childhood was a lonely one, growing up as a strange, quiet child in an isolated seaside town. Yes. And, what'd you say your mom was? A composer or an accountant? Composer. His mother was a composer who, with the need to support her family, took a job as an accountant. Yes. How would you describe her as a teacher? More encouraging or demanding? Kind of like your champion or more like a taskmaster? यार यहाँ पे तो डिमांडिंग नहीं, एनकरेजिंग थी उन्होंने। Therefore, as his piano teacher, she was ever encouraging, teaching him to recognize the greatness within. How about that neighbor girl? Huh? What was she to you? Was she your best friend or first love? Now be honest here. Don't be bashful, man. You can tell me. I think first love था, इसके बाद तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमारे पास। But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his first love and blowing it the next day. भाई लग रहा है। Now from that moment forward, his mother gave up on him. She knew he didn't have what it took to be a truly great musician. But little did she know, she just picked the wrong medium, right? See, when he was 12 years old, he got sick, and he had to stay inside for an entire year. And in that year, he rediscovered a talent he'd forgotten. Painting. Sure, he loved finger painting as a child. Color and shape were the first languages he learned to speak. But for the first time, he saw it in a more serious light. He was accepted into an exclusive art school where he caught the eye of an esteemed professor who launched his work into the national spotlight. Now be quiet, all of you. With expectations on his career mounting, he stalled himself into bankruptcy, which turned out to be a blessing,
For it wasn't until he returned home to the house he grew up in that he began work on what would ultimately be considered his masterpiece. मैं बोलूँगा एक बार. Shut up, you scumballs! You lucky fowls! एक बार इसको बोल लेने दो फिर हम बात करेंगे. All right! I get it! I hear what you're saying. ओह, गेट खुला है भाई. गेट कीपर का गेट खुला है. I had assumed as much anyway. I should probably tell you, those things, they're not regular gulls. They're liar birds. They're what becomes of souls who try to lie to the gatekeeper. And once they try that, they're never allowed near her city again. I get to feeling bad for not defending them right, so they just stay on with me. Living reminders of my oratory shortcomings. Oh, yeah, good thinking. I'll be back to get you once I'm done with this one. आपको सब कुछ समझ में आ रहा है आई थिंक कि वो चिड़िया कौन है, अब हम कौन है, सारी चीज़ें. स्टोरी को भाई कितने नेक्स्ट लेवल से समझाया गया है यहाँ पे. मुझे नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है और हमने कहीं पे भी झूठ नहीं बोला है, तो आई डोंट नो कि हमारे साथ क्या होगा. फट देखते हैं. Just look at him. Poor fool doesn't know what he's in for. ओ भाई, ओ भाई, हम कहीं तो पहुँचे. हम गेट कीपर के पास पहुँचे हैं. गेट कीपर से हमें झूठ नहीं बोलना है. अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम वो चिड़िया बन जाएंगे. Don't think that I haven't dealt with people like you. You're ashamed of something. Something so terrible, you're trying to blink right past it. Because if the gatekeeper knew, she'd have to dream up fresh new hells to punish someone as worthless as you. And I'm sure you're right. I'm sure you're the rottenest भाई मैं ब्लिंक कर रहा हूँ जैसे जैसे, तो वो देख लाइटें जल रही हैं. black muck. And I should have thrown you back and sanitized my paw as soon as I laid eyes on you. But it's too late for that. We're in this together. And the gatekeeper, she'll see right through your fake lies as if they were glass. So I'm gonna ask you again to start from the very beginning. And this time, I want the truth. बिल्कुल पूछो. ओके, हमको वापस से भेज दिया गया है. क्यों? Not this. अच्छा, ये वाला नहीं. Now play the C major chord I taught you. Remember? Come on, keep blinking. I haven't found it yet. Doesn't that make you feel happy? You know, my father once told me when I was about your age. This. Stay here. What did your mother hear on that phone call? Keep your eyes open. I need to see. ओके ओके, हम अपनी आंखें खोली रखने की कोशिश करते हैं. अरे फोन उठाओ, मेरी आंखें जल रही हैं. I'm getting it. Hello? Yes, of course. This is Elle, his daughter. आई थिंक उसके डैड एक्सपायर हो गए यहाँ पे. She knew she hadn't yet lived up to her father's expectations. And now, she could never never. could.
Let's keep going. You really need to stay in time with the metronome, okay? You were a prodigal talent. I get it. Let's move. One knee in it. We'll be eternally indebted. What did you just say? This isn't a trip down memory lane. I need... Yes, I understand about the cat. Let's keep going. Okay. This one. यहाँ पे कुछ है. आंखें खुली रखनी है, मेरे को ब्लिंक नहीं करना है. Let's try this again. ब्लिंक कर दिया मैंने. अरे हो जाती भाई. अरे Keep your eyes open. सॉरी फेरी मैन. सॉरी. मेरी आंखें हो जाती क्योंकि हवा चल रही है पंखे की. ओके, खुली रखेंगे, खुली रखनी आंखें. हाँ अब ठीक है, अब ब्लिंक कर सकते हैं. What? The death of those cats must have taught you a terrifying lesson. That simply being alive wasn't enough. So then you went to work to make yourself sensational. Listen to him. I like hanging out with you a lot, which is weird because after what happened, Stay here. Oh. I never like hanging out with anyone. I know you want to stay here, man, but we don't have the time. So ठीक है. This is the I'm not place. worried about who you are, Benny. I'm worried जब about वो मैंने फोल्ड करके फेंका ना, वो मेरे को नहीं would करना you चाहिए mind था. taking a quick walk with me down to my office? Come on, keep blinking. We can focus him. Make sure he's staying engaged. Can we please try to speak a little softer? I really don't want him to hear us talking about this. आई थिंक जब वो मैंने फोल्ड करके फेंका ना, मेरे को वो नहीं फेंकना चाहिए. अरे One more time. हाँ ठीक है, वन मोर टाइम. Staying engaged. Can we please try to speak a little softer? आंखें खुली रखनी. अरे फट. I swear to God, if you blink again. आई एम सॉरी. Time in his development. He shouldn't be confined to his room. Yeah, but look, I mean, having him home for a little means I can spend more time with him. You know? We can focus him. Make sure he's staying engaged. Can we please try to speak a little softer? I really don't want him to hear us talking about this. I need to hear what they're saying. Really try to recall it. मुझे नहीं पता. Try closing your eyes. It might help you remember. I mean, what's the point? What do you mean? What's the point? भाई साहब, मैंने सच में What does आंखें that बंद mean? करी तो उन्होंने आवाज ऑन कर दी. क्या बात है. Of any of it? If he's never gonna get any better. Okay. Let's not say that. Okay? We know we don't mean it. I know I don't. I know. I mean, what if he heard? If he heard one of us saying something like that. I'd never forgive myself. It's okay. He's asleep. But it's okay. I see. You got sick. You howled at the moon, at the top of your lungs. भाई साहब क्या मस्त बनाया है यार. गेम तो भाई नेक्स्ट लेवल बनाया है. आंखें बंद करी, आगे बढ़ाना है. वापस आ गए.
तो क्या समझ में आया बताए हमको भी। You were sick for a long time, weren't you? Yes. Sicker than healthy kids are supposed to get? Well, no matter how painful it gets, I need you to remember. We're almost at the end of this. I promise. You know what? This हाँ, isn't video game फिर से आ time. गए। I want you to figure out something actually productive to do while you're home from school. Try writing with it. Well, hello, Benny. It was your grandfather's, but I used it in college to write lyrics. तो क्या बहनी बोल नहीं सकता है? Exactly. Was very artsy. Actually, I was just good at fooling Okay. your dad. Made him think I was some kind of genius. Why don't you write the story of your life so far? And then what you're going to do once you get better. That's the story I want to hear. Okay. The Great Life of Benjamin Bring. His childhood was a lonely one. Growing up a strange and quiet child in an isolated seaside town. His mother was a composer who, with the need to support her family, took a job as an accountant. अब मेरी आंखें दर्द करने लगी। Man, this is wild. ओह क्लोई आई। You really got into this, didn't you? Oh, here I am. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his first love and blowing it the next day. First love? Okay, Benny. And you know, we really could have just slept on the beach another night. But Nice. Okay. Oh, You're bhai. going to be in there for about 30 minutes. So Try to be comfortable. MRI machine. हम MRI मशीन के अंदर जा रहे हैं। You're doing great, buddy. Just a little longer, okay? ओके देखते हैं हम कितनी देर रह पाते हैं यहाँ पे। मैं ब्लिंक करने की कोशिश नहीं करूँगा। ओके ब्लिंक कर दिया मैंने। You're gonna be so annoyed with me, but I couldn't help but overhear Chloe reading loud from what I think was your story the other night. I know. I promised myself I wouldn't eavesdrop, but I would really love to read it if you'd let me. What do you say? You know I'm such a big fan of anything you do. The Great Life of Benjamin Bring. तो ले लीजिए आप स्टोरी ये पढ़ दीजिए। Can't. Just go in there and tell him you loved it. I'm sorry, I just can't. अब ये हमारे वो बीमार वाले दिन दिखाए जा रहे हैं जब हम सिक थे बहुत ज़्यादा और हम कहीं नहीं जा पा रहे थे। Hey, B. Just want you to know that Mom loved your story. She's just, I think it was just very emotional for her to read. But I thought it was great. I mean, look at this. His childhood was a lonely one. Growing up a strange and quiet child in an isolated seaside town. I'm certainly bummed you feel that way. But what I want to know is, where'd you learn to write so well? All those cool words. It reads like Dickens. ये हमारे बीमारी वाले दिन है। आगे Benjamin Brin was a loser. What? He was the worst friend to ever
लिव। ओ माय गॉड भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। He didn't even try to fight the disease inside him. Oh, he just laid down and died. गेट कीपर के पास हम पहुंच गए। Oh God, can you hear me? Richard! Richard, get up! I'm up. What's going on? I think he's unconscious. Call the paramedics now. तो इस तरीके से हमारी मौत हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा नहीं, अभी हमारी मौत नहीं हुई है, अभी हम जिंदा हैं। So, if he's ever in pain, all he needs to do is press that red button and the drug will administer itself. Thank you so much. You know, I know my wife would normally want to thank you herself. No, I understand it hits mothers the hardest, this sort of thing. Thank you for understanding. It's been a rough one. जब हम पेन में होंगे हमको ये बटन दबानी है और हमारा पेन चला जाएगा, क्योंकि दवा ड्रॉप हो जाएगी। Hey, Eddie. Yeah, hey man, it's Richard. Listen, I know Elle's been missing in action, but I just want you to understand things have taken a really bad turn here. Yeah, no, that's not going to be possible. To be honest, your whole tone is pissing me off right now. Yes, I understand you have a business to run. It's a very cliche thing to say to me in a time like this. Okay. Well, then I guess all I can say is screw you too. अरे नहीं, ऐसा ना I करें। said screw you too. Yeah, man, that's all I got. Okay, क्लोई का फोन आ रहा है। We need to pick up. Hey, this isn't funny, you know. What? You're too scared to talk to me? Well, just so you know, I know you're faking. Because if you were really sick, like actually sick, you'd have told me already. I happen to actually know about this stuff. So the fact that you are faking... I'm not faking, I'm actually sick. I remember when you were just 4 years old. Mom was going through a pretty tough time. I mean, not as tough as now, but yeah, her music had been rejected, and she's having trouble adjusting to her quiet little life out here, and I feared that... भाई हम इतने क्या ज़्यादा सिक हो गए हैं कि हमको पेन के लिए एक बटन दे दी गई है और दवा नीचे आ जाती तो हमारा पेन कम हो जाता है। Hands reaching up for the keys. She just couldn't believe. काफी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है यहाँ पे। Once she heard that, well, it was like you brought her right back to me. So, I was wondering if maybe you could do that trick again. Try closing your eyes. See if you can remember. Wait, is that's my bass. How did you figure out how to play that? भाई विजुअली इस गेम ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम। समझ रहे हो, आंखें बंद करो तो आपको वो चीज़ें आती हैं, आप हेडफोन लगा के आप मैं एकदम इस गेम के अंदर हूँ इस टाइम, समझ रहे हो। आई एम इनसाइड द गेम, मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ।
इस तरीके से विजुअली मेरे को अभी तक जितने भी गेम मैंने खेले इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है कि आप अंदर जाके जीते हो भाई। बटन दबाई। थर्सडे की दवा खाई हमने। What are you doing, Elle? She's gonna make you sick. Oh, it's okay. I'm just so happy she's here. We've got to show this cat some real love. She's been through more than we can even imagine. बिल्कुल यार, उसके बच्चों को मार के वो डॉगीज खा गए थे। Richard, we have to give Ernie a haircut, okay? Getting her a sashimi plate. What? What? I think she more than deserves it. Oh, I think you're right. अरे भाई आगे बढ़ते हैं। भाई ये पेन बढ़ता ही जा रहा है। She hasn't been over. Like, she didn't even care to visit? No, I mean, I don't think he's told her. And you're just letting that be? I don't know her step. You know how Benny is. She lost her mother a year ago. You knew that, right? No, but what does that have to do with... Okay, do we have her dad's number? I don't know. Check the book. Okay, I'm calling now. Honey. ओ भाई अब तो Oh my god, you're an idiot. You Bhai. do realize this is really nothing special to me. I've seen this all before. I was thinking about what you said in the story the other day and how I reacted to it. I feel kind of bad. I shouldn't have done that. But ये क्या लिख रहा है? what are you looking at? Don't look up there. Look at me. I'm talking to you. आई थिंक मुझे उसको देखना चाहिए। स्टे हेयर। अच्छा स्टे हेयर। पिछली बार कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम बीच में स्टे हेयर। स्टे हेयर। I want to give you something. But I think I don't want to be in the room when you see what it is. So maybe if you close your eyes, I can give it to you and I'm going to leave. Close your eyes now, okay? भाई ये क्या देने आ रही है? मैंने तो आंखें बंद कर रखी हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी सच में आंखें बंद है। अगर आंखें नहीं बंद करूँगा तो आगे स्क्रीन नहीं वो बढ़ेगा नहीं, गेम नहीं बढ़ेगा आगे। भाई वो चली गई। अच्छा ओह यू आर माई फर्स्ट लव, लव क्लोई। अच्छा था भाई, यू आर माई फर्स्ट लव, लव क्लोई। अरे भाई अब तो
अब तो और मुश्किल What is होता जा that? रहा है Something दवाइयाँ new I'm खाना working और on. सब की सारी चीज़ें। So you're writing again. Ah, it's just a melody that came to me. It feels good to play it. It's sad. Yeah, well, that would make sense. But do you like it? I mean, yeah. I love everything you do. What do you like about it? Not this old trap. Go on. I'm waiting. Well, it made me feel like if the unspeakable darkness I'm carrying can be so well expressed, maybe it's not so unspeakable. Nailed it, didn't I? Yeah. I mean, that was pretty good. अरे दवा तो खा लेने तो, दवा भी नहीं खा रहा है, जूस भी नहीं पी रहा है ये बंदा। बी ब्रेव। और ये फटी भाई, फटी 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 अपनी भाई, दर्द बढ़ता जा रहा है। अब तो खा भी नहीं रहे, दवा भी नहीं खा रहे हैं। गए गए गए, मरे 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 हम। Be brave, many things to you, thinking of you, get well soon। हो गया काम। I can't breathe. I know. It's okay, Benny, I understand. There's no need to show me anymore. No, Richard, it's like I can't breathe. Like there's this cramp on my chest. I know. It's okay. You can come back to me now. You know, for a while now, I've wondered if I'm just not a good enough storyteller. If I just don't have grand enough words, can't tell grand enough stories. But grand words and stories, I think they may be overrated. ओह, हम पहुंच गए भाई गेट कीपर के पास, I think। I know just what to tell her. Watch for her now. I've seen the gatekeeper take many forms depending on the soul I bring her. But once you see her, you'll know. Believe me. ऐसा क्या? अच्छा, I should go get ready. गेट कीपर भी उसका रूप ले लेती है। We got this. I think. I think क्या होता है, तेरे हाथ में मेरी जिंदगी है। अब मेरे को जन्नत मिलेगी या मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या कर रहा है भाई? डोंट से यही गेट कीपर है। फिलहाल ये गेट कीपर नहीं है जितना मेरे को लग रहा है, गेट कीपर कोई और होगा। ये रेडी नहीं हुआ अभी तक। ये ऐसा कर क्या रहा है जो रेडी होने के लिए इसको इतना टाइम लग रहा है? अरे भाई, मेरी फट रही है भाई। ओ भाई, ये रही गेट कीपर। इसने कैट का रूप, Wish me luck. कैट का रूप लिया है भाई उसने। Gatekeeper, before you sits the soul of a child who died before he could grow old. That means she's ready to hear your story. You know, I never told you how much I loved your story. It's really so imaginative. And the person you wrote about is such an interesting and intense guy. ओ भाई, ये स्टोरी सुन रही है मेरी बैठ The के। only issue was, well, I didn't like him very much. So, I wanted to read you something I wrote for you, which is about the Benny I've known for 11 years now. It's called The Great Life of Benjamin Brin. Benjamin Brin was born into an ordinary home, to an ordinary mother and father
in a small town by the sea. His mother was a composer, or at least that's what she dreamed she'd be. So, when her own dreams didn't pan out, She began to dream for him. But then, When he he was was just just 11 11 years years old, old, he got sick and forced to he got stay sick and was forced to stay inside for an entire year. And in that year, he began to worry that he hadn't lived enough. So he made up a story of the great life he thought he wanted to live. Ooh. Which only made him forget the great life he already had. How he had filled a new home with light and joy and promise. How he met a girl, his neighbor, who felt all alone in the world and made her feel okay again. And how, even when he was sick, he still gave his parents hope. How he reminded them exactly who they were after they had almost forgotten. So when he was going to go, he was okay. Because he'd already lived a great life. A full life. And he was everything he needed to be. Just as he was. Nice story. She accepts. Oh, bye. Close your eyes now and keep them closed. She's gonna let you in. Go on. चलो तो जन्नत के दरवाजे पे हम चलते हैं, आंखें बंद कर रखते हैं फिलहाल। और यहाँ पे हमारी एक स्टोरी एंड होती है भाई। गेम की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप हेडफोन लगा के आपने ये स्टोरी देखी है तो आपको पता होगा कि भाई स्टोरी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को इस गेम को खेल के। गेम खेला क्या, हमने एक तरीके से एक पूरी स्टोरी को जिया है, यहाँ पे हमने लिव किया है इस स्टोरी को। भाई नेक्स्ट लेवल थी। मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं है। आपने भी पूरी स्टोरी देखी है, मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। ऐसे ही और मज़ेदार गेम्स आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट गेम में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।